Good evening everyone and welcome to our 3-day festival of Meraki. It's no time for goodbyes and it's just the beginning of a joyous event. So sit back and enjoy. Meraki, derived from the Turkish word merak, means doing something with love and passion. And I can vouch for the same by seeing the tremendous hard work of the teachers and students working to make Meraki a successful event and giving the word a truly beautiful and righteous meaning of the same. Oh, that brings me back to the last year's Meraki. Do you remember it, Kamakshi? Remember it? How can I forget? It was an absolutely wonderful and mesmerizing experience. Yes, I totally agree with you. This brings me back to this year's themes. Wait, what was it? Man, nature? Kamakshi, it's man and the natural world. This year's theme is based on the burning issue of 21st century, Sustainable Development Goals, and the role of social, emotional and ethical learning initiated by His Holiness, the Dalai Lama. With that, let's look back on the previous 2 days of Meraki, starting from the 5th of January where we went through a jaw-dropping performance, Adi Yogi. An illuminating panel discussion with the gracious presence of Padma Shri Chitra Visheshwaran, Mr. Kailash Kumar, Ms. Monica Devan, the fruitful experiences of Ms. Anuradha Nirala, Ms. Gunjan Tripathi, and musical notes by Arunima Kotiyal. And don't forget the mesmerizing performance of Upside Down. On the second day of the event, we saw joyous and trickling performances by the students of KPS, guided by the Performing Arts faculty, like Karpura Gauram, Katha Ek Vriksh Ki, Udan, Keys of Fire and Upside Down. And here we are on the last day of this astonishing event. So let's start with the opening classical dance performance, Ode to Nature, by the students of grade 4th to 6th. We see you every day in the fields of corn and in the fields of hay. You represent the goodness of the earth from your valleys of flowers to your grass of the plains. These are the examples of your beauty in every domain. The forest of trees in your house, from animals, birds to mouse. Skies of blue and wisps of clouds hang over your earth and the ground. The crashing waves, the salt, the spray, the solitude of a secluded bay. Your mountain peaks of majestic heights to prairie lands of distinctive sight, whether in the arid, desert land or the ice and snow of Arctic land. The passage of time your seasons spare to all who take the time to stare. You are a magnificent, awe-inspiring sight, from your gentleness to your powerful might. Presenting to you Ode to Nature. Earth is the only known planet having life in this universe. We should respect and maintain everything we get from our Mother Earth. Jana
Thank you so much for such a wonderful performance, which completely encompassed nature as a whole. God is the friend of silence. See how nature, trees, flowers, and grass grows in silence. See the stars, the sun, the moon, how they move in silence. We need silence to be able to touch souls. The whole world is surrounded by sound. Wherever there is life on earth, there is sound. The ancient texts are also filled with the worship of Nad, meaning music. नाद का अर्थ है आवाज, ध्वनि, वॉइस। भारतीय ताल वाद्य में, अवनद वाद्य में स्वर के आधार पर नाद औरा की रचना की गई है। कक्षा 5वीं से 11वीं के छात्रों द्वारा आपके सामने प्रस्तुत है नाद औरा। नाद, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नाद क्या है? क्योंकि नाद एक स्वर है, एक ध्वनि है। दुनिया के अंदर जितने भी हम रहते हैं, सुबह शाम जो हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब एक ध्वनि से ही रिलेटेड है। हम सुबह अपनी शुरुआत करते हैं, सुबह की मॉर्निंग जो हमारी होती है, ओम से एक साउंड आता है, वही हम मस्जिद की अजान में सुनते हैं, चर्च की बेल में सुनते हैं और गुरुद्वारे की गुरबानी में सुनते हैं। एक जो ओम का साउंड है वो सब के अंदर है। और उसके बाद हमारा प्रकृति का जो नेचर है, एक झरने की आवाज़, उसको भी हम महसूस करते हैं। और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, कोयल की कूकू की आवाज़, वो सब ध्वनि पेश करती है, प्रस्तुत करती है। हमारे पूरे संसार के अंदर जो ध्वनि है एक आकाश का काम करती है। जैसे पृथ्वी के लिए आकाश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को देखते हुए संगीत के लिए ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है। ध्वनि नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक स्वार में जैसे हमने नाद औरा के अंदर पेश किया, वो ए शार्प के अंदर 5वां काला जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने सारे तबले को ट्यून किया और उसको एक स्वर के अंदर मिला कर जो वाद्य है हमारा वो सिर्फ एक स्वर में मिलाया जाता है और उसी स्वर के साथ हम उसको फैलाते हैं। पूरे से सराउंडिंग के अंदर उसकी जो टोन है हम अपने साथ साथ मिलाते हैं। और आज जो हमने जो किया नाद, उसके बाद क्या था हमारा औरा, नाद औरा। जब हमने नाद के बारे में इतनी बारीक बातें सीखी तो उसके साथ औरा का जो हमने क्यों जोड़ा, तो वो इसलिए जोड़ा, औरा का मतलब होता है मिलन। नाद और औरा मिलाना, मतलब हमने एक ताल के अंदर एक कंपोजिशन को बनाया, फिर उसको किसी एक ताल के अंदर उसको लिपिबद्ध करा और उसे हमने बजाया। सब लोगों ने मिलकर, हर एज के बच्चों ने मिलकर उसको एक प्रस्तुत किया, पेश किया। किस तरीके से? एक ताल के अंदर। जब हम 4 लोग एक साथ चलते हैं तो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। जब हम किसी एक लय में होते हैं, पहली लय, दूसरी लय, तीसरी लय, चाहे किसी को पता नहीं है वो लय के बारे में, मगर जब हम चलते हैं तो हमारी एक लय चलती है। जब हम भागते हैं तो लय हमारी डबल होती है। तो उसी को लय को हमने बराबर करके एक औरा के तरीके से पेश किया, जो आज हमने नाद औरा हमने बजाया।
जो हमने कोई सी भी एक ताल के अंदर उसे बनाया। अपने ताल के अंदर बनाने के लिए हमने उसके जो टुकड़े हैं, गते हैं, कायदे, उनको एक लिपिबद्ध में बनाया, बांधा। जो ताल की हमने देखा कि ताल से आगे पीछे ना हो, 16 मात्रा है तो 16 मात्रा है, बराबर के 4-4 के खंड के अंदर हमने उसे बनाया। तो उसे हम मिलाने को, लिपिबद्ध करके एक चीज़ को पेश करना, ताल कचहरी को बनाना, उसे हम कहते हैं नाद।
Wow, what an absolutely mesmerizing performance. Thank you for blessing our ears with those melodious sounds. Chup Katha, Voice of Silence, talks about the expression of nature in a very subtle way amidst the tension between the animals and the human community. The balance of our earth is in the right harmony with plants, animals, and humans, and wherever it is disturbed, the earth hangs in the balance. Among these three factors, humans are the only ones that have been exploiting the other two factors. But what if the animals stand up against this exploitation? Have you ever wondered, Kamakshi, what will happen if animals are given a chance to express their views in front of humans? To be honest, I have not, but I would like to now. Wow, Chavidi, that sounds very interesting. I am sure that everyone, including me, can't wait to see this performance. Oh, don't forget me. Oh, of course, you too. Well, presenting to you, Chup Katha. कहाँ गया सारे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं बोलूँगा तो पोल खुल जाएगी। क्योंकि मैं जैसे को जैसा और वैसे को वैसा दिखाता हूँ। जल्दी आजा भाई। हाँ जी सर, हम तैयार हैं जैसे को वैसा करने के लिए। नमस्कार, सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृषि कानूनों की वापसी पर, जिसके चलते बॉर्डर पर किसानों के बीच जश्न का माहौल है। ये क्या किसानों का मुद्दा लेकर बैठ गए? हटाओ इसे। सर, रिसेंट मुद्दा तो यही है। भाई किसान को छोड़ो, जादव को पकड़। अब ये कौन सा नया मुर्गा है सर? इस मुर्गे ने ही तो खोली हमारी नींद। मुर्गे ने पूरा जंगल खड़ा कर दिया है। मैं समझ नहीं पाया सर। ज्यादा दिमाग लगाएगा तो रेस में पीछे रह जाएगा। हमें आज ही माजुरी के लिए विजिट करना है। रिपोर्टर को बोलो तैयार रहिए। आज हमारा घर और बड़ा हो गया। Yes, and we have no shortage of anything. We have river water, all kinds of trees, fruits, flowers, and clean air. अब हम जब चाहे इस नदी में और इस जंगल में एंजॉय कर सकते हैं। Now even the new trees have become friends, and they don't even forbid us to play with them. We can jump over them. You saw yesterday how I was hanging on the tree. Jadav uncle saved us. If bamboo trees had not been planted 30 years ago, then this generation of us would not have been alive today. यह तो मेरा फर्स्ट था और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इसे समझें। What do we have to do with the rest? We are happy on our own. मैंने एक सुबह ही अखबार में खबर पढ़ी जिसमें हमारे माजुरी के बारे में लिखा था। मतलब हमारे इस घर की खबर लोगों तक पहुँच चुकी है। How could it be? We haven't seen anyone around here. कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी दिखा था जो फोटोज ले रहा था। मीडिया से था, उसी ने अखबार में छापा होगा। ओए, मीडिया की तो ऐसी तैसी कर देनी है मैंने। We can never see us and our home happy. This human community has done a lot of torture. मैं पहले ही कह रहा था, अब हमें अपनी भावनाओं का एहसास उन्हें करवाना होगा, उन्हें समझना होगा। हमें और हमारे इस घर को। Wait! I am smelling something strange. I have never smelled such a smell before. कौन है वहाँ? सामने आओ। ये न्यूज़ चैनल से आए और आप सबका इंटरव्यू करना चाहते हैं। लेकिन हमको इंटरव्यू नहीं देना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारे तरीके से जीने दें। हम अपने में ही खुश हैं। अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो अब तक आप लोगों के पास ना पहुंची हो, तो आप क्या आपके लीडर हमें इंटरव्यू देंगे? कौन सी बात? सरकार के लोग आपकी इस जमीन को अपने कब्जे में करने की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे ले लेंगे?
लेकर दिखाइए। आपकी जमीन आपसे बिना मंजूरी के ले ली जाएगी और सरकार इसके बदले में आपको कुछ मुआवजा देगी। पर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, एक बार समझ में नहीं आता क्या? आपके मुआवजा न लेने पर भी सरकार आपकी जमीन पब्लिक पर्पस के लिए ले सकती है और आपका मुआवजा सरकारी खजाने में जोड़ लिया जाएगा। अब तक ये खबर हमारे पास क्यों नहीं पहुंची? क्या आप भी उनसे मिले हुए हैं? नहीं, हम तो यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं और जब तक यह खबर आपके पास पहुँचेगी तब तक सरकार एक्शन में होगी। और इसमें आपका क्या फायदा है? देखिए, हमें नहीं उससे मतलब है, अब फिर वे यहाँ से बने या कहीं और से। ऐसी बात है तो हम आपके न्यूज़ चैनल पर जरूर इंटरव्यू देंगे। पर पहले हमें अपने लीडर से बात करनी होगी। ठीक है, आप बात करके हमें बताइए। रात के शो में आपका स्वागत है। What has come before us today in the form of a crisis? I had seen it in my dreams long ago, when in my youth I saw the selfish, ruthless form of this human race. What I expected came true today. Friends, what is the nature of this life of ours? Our life on this earth has always been short and enslaved. Many of us friends have tried to live in harmony with the human race, but what happened in the end? You cow that I see before me, how many thousands of gallons of milk have you given during this last year? And what happened to that milk, which should have been breeding up sturdy calves? Every drop of it has gone down into the throats of our enemies. And you hens, how many eggs have you laid in the last year? And how many of those eggs ever hatched into a chicken? The rest of all gone to market to bring in money. In the end, the essence of all these things comes out that we are born, we are given just so much food as will keep the wealth in our body. And those of us who are capable of it are forced to work till the last atom of our strength. And the very instant our usefulness has come to an end, we are slaughtered with hideous cruelty. Our life is nothing more than misery and slavery. In fact, our feelings were never understood. That is the plain truth. But is this simply part of the order of the nature? No, my friends, 1,000 times no. There is only one way to live happily on this land, which is when everyone here, whether it is us, nature, or the human race, we all understand the importance of each other and do not hurt each other's feelings. The best example of this is the high peak phase of the coronavirus that passed some time ago. When the chain of the entire human race was broken, everyone was locked in their houses at the same time. Nature got human. Every part of it, like air, trees, stars, water, sky, all blossomed, and their cells felt free. Their cells came out of the forest and towards the road because now they were no longer threatened by the mankind. But as it began to diminish, the human race ventures too far again. This led to the understanding that the human community could never be trusted. And this community, man, is the enemy of man. So what can we expect ourselves? So now the time has come for us to stand together and rebel against this, to save ourselves and our home. So this is my message to you, friends. Rebellion! कैसे हैं सब? आज सब सूर्य नमस्कार किए हैं कि नहीं किए हैं? दादा पूरे 10 बार किए हैं। बहुत अच्छे भोगी, इस बार भी प्रदेश तुम्हारा। जय श्री राम। नितिन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? दादा, उसी की वजह से तो जंतर मंतर पर मामला बहुत गर्म है। मैं तो कहता हूँ रेडियो पर दिल की बात कर ही डालिए। करेंगे करेंगे, सब होगा। दादा, अरे उज्ज्वला,
भी आई हो। दादा, ये सारे जंगलों से निकलकर सड़कों तक पहुंच गए हैं। मामला हाथ से निकलता जा रहा है। कब होगा? होगा, योगा से होगा। काजनाथ, तुम्हें रक्षा में क्यों रखा है भाई? खदेड़ो भीड़ को। दादा, इस बार खदेड़ने से काम नहीं चलेगा, भीड़ बहुत ज्यादा है। लगता है मामला कुछ ज्यादा गर्म है। छोटा भाई। हाँ जी दादा। वकील के स्टूडियो पे फोन लगाओ और रात की न्यूज की स्क्रिप्ट तैयार करवाओ। सर, जंतर मंतर पर मामला गर्म है। रात की शो की स्क्रिप्ट मिल गई अपने को। एक काम करो, हमारे कुछ साथियों को उन जानवरों की भीड़ के बीच और छोड़ दो। तीर का नखरा समझ नहीं आया। छोटा भाई का कहना है भीड़ के आधे जानवर बेवकूफ हैं, दूसरों के बतलाने पर आ गए हैं, उनको रात की शो में लपेट मारो। बात है सर, मोटा भाई का कोई जवाब नहीं। जाना पहुंचे कोई, वहाँ पहुंचे थे मोटा भाई। और उन्हें ये भी तो लगना चाहिए ना कि देश में कोई मीडिया चैनल है जो उनको पूछता है, उनके साथ खड़ा हो। उनके साथ खड़े करने में क्या जाते हैं रैया, सब जोक ही तो कर रहे हैं। Good evening. Welcome to our special program Guftagoo. Before we start the discussion in the studio, let's go quickly to Jantar Mantar and know what is the situation there. आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में मोलाई जंगल का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। इनका क्या कहना है, एक बार इनसे ही जानते हैं। आप लोग यहाँ कई दिनों से बैठे हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं? चैन से जीने दो हमें। क्या तकलीफ है इन इंसानों को हमसे, जब चाहे हमारी जिंदगी में घुसे चले आते हैं। सरकार के इस कदम से भावनाएं आहत हो गई हैं। उन्हें हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि वो और हम एक दूसरे पर निर्भर है। हमारे समुदाय के अंत में उनका अंत भी छुपा है। डॉक्टर जादव जी, what is your opinion on this? इस धरती पर इंसानों से पहले यह पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, लेकिन जैसे ही इंसानों का विकास होना शुरू हुआ, यह पेड़ पौधे और जीव जंतु की अभिव्यक्ति पर खतरा मंडराने लगा। आप 2022 में बैठकर किस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसी कहानी तो नेशनल ज्योग्राफिक पर हमने बहुत देखी है। आप मुद्दे पर आए। देखिए, मुझे राजनीति नहीं आती। मैंने अपने जिंदगी के 35 साल इस मोलाई जंगल में दिए हैं। प्रकृति और जीव जंतु के समुदाय के बीच रहा और तब समझ पाया कि वह भी कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हम इनके अभिव्यक्ति के आधार छीन रहे हैं? देखिए जंतर मंतर का माहौल, सब खुलेआम घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति पर खतरा है। लेकिन ऐसी स्थिति आई ही क्यों कि समय समय पर अभिव्यक्ति की और चैन की जीन की आजादी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े? इनकी अभिव्यक्ति को हम बखूबी समझते हैं, इसलिए हम जियो और जीने दो और पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ का नारा समाज में हम बुलंदी से रखते आए हैं। ये सब आपके जुमले हैं जी, जो सिर्फ भाषणों में सुनने को मिलते हैं। असली जमीनी सतह पर देखे तो सब खोखला है। हमें इन जुलमुलों से कोई मतलब नहीं। आप लोग हमारे घर को मीडिया और अखबार में दिखा कर इसे इतना बड़ा हुआ मत बनाइए। हमें साधारण तरीके से जीने दीजिए। तो आपको और पूरे समुदाय को पुरस्कृत करना चाहते हैं और आपकी कहानी बाकी जनता के बीच रखना चाहते हैं, जिससे प्रकृति पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को एक दिशा मिले और आगे आने वाली जनरेशन भी आपकी कहानी से कुछ सीखे। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, बस हर इंसान प्रकृति और जीव जंतु के बीच के तालमेल को समझे और उनकी भावनाओं को भी समझे और उनकी इज्जत करे। And here's the big news. Clashes broke out between Malay community and police at Jantar Mantar. Police had to lathi charge. Also, a big announcement of the government. Section 144 enforced at Jantar Mantar. Many protest sites, including Jantar Mantar, have been sealed.
सुहाने दिन आशिकाने दिन ओशिकी नवी मगी के वो पुराने दिन गुजर गए हम किधर गए पीछे मुड़ के देख पाए सब ठहर गए अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े जाएंगे कहाँ क्या कुछ पता नहीं कह रहे हैं वो कि हम की है खता नहीं पुराने दिन सुहाने दिन आशिकाने दिन ओशिकी नवी मगी के वो पुराने दिन गुजर गए हम किधर गए पीछे मुड़ के देख पाए सब ठहर गए अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े जाएंगे कहाँ क्या कुछ पता नहीं कह रहे हैं वो कि हम की है खता नहीं पुराने दिन सुहाने दिन आशिकाने दिन. These kind of performances really make you think about the importance of perspectives. Don't they, Kamakshi? Yes, indeed. That was absolutely brilliant and fun at the same time. Water, quenching the thirst of billions of living organisms for centuries. It has bestowed life on Earth. Today, tragically, it is choked by trash, overheated and uncared for. So that 2.2 billion people around the world still lack managed drinking water, including 785 million without basic drinking facilities. The demand for water has outpaced the world's population. Half of the world's population is already facing severe water scarcity at least 1 month a year. 3 billion people worldwide still lack basic hand washing facilities, which is the most effective way for COVID-19 prevention. On the contrary, there are millions who waste water in a cruel manner. The last presentation of this event is a dance theatre, Pani, a reminder to all of us to take care of this benevolent element before it is too late. Pani is presented to you by the students from grade 5 to grade 11 and alumni Shivam Roy and Dev Aditya Tomar, including alumna Riya Shukla. We gaze at the power, mighty and majestic, as it flows seamlessly through the crevices of earth. Its strength sustains us, pure bliss with infinite enchantment, its eternity, its charm, in all its marvel and glory of creation. Life begins here. It nourishes, shapes and awakens the unborn hopeful seed with the beauty it brings, with the soulful curves of this body. All that remains is peace and tranquility. The birth of life, the source of purity, liberating us from the chaos. We bow to its benevolent power. I am a mystical creation. Am I solid, liquid, or gas? A wave or a tsunami? Do I create or do I destruct? A mighty, dense ocean and a beautiful, playful river. As I flow in my streams, cutting through the magnificent mountains, I break again and again to nourish nations and civilizations through the history of time. Ganga, Yamuna, Brahmaputra. I have many forms. I am the wave, the stream, the river, who can vitalize the banks, the source of joy and amusement for thousands of creatures living underneath and around. Ganga Yamuna Saraswati Sindhu Kaveri Narmada Jale
सन्निधिं कुरु गङ्गा यमुना सिन्धु कावेरी नर्मदा गोदावरी श्री सरस्वती गङ्गा यमुना सिन्धु कावेरी नर्मदा गोदावरी श्री सरस्वती गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना अलकनन्दा जानवी ब्रह्मपुत्र गोमती तुङ्गभद्रा स्वर्णरेखा मयूराक्षी पार्वती गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना भागीरथी कविनी शरावती साबरमती अमरावती तपती भागीरथी कविनी शरावती साबरमती अमरावती तपती मंदाकिनी सरयू नेत्रावती कुंडली महानदी पंपा वेद्रवती सोनवैतरणी सबरभीमाग्रही दामोदरा वैदे भवानी कृष्णवेणी पीताम्रपर्णी गङ्गदेशी शततरी गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना गङ्गा यमुना I start as rain, flow through the rivers and end up in the ocean. And the cycle continues. It will take me years before I became just like now. But to humans, I'm just there. What will they do when I'm no more? Will they be waging wars over me? Probably. I'm choked by trash, overheated and uncared for. I will lash out in rage before it is too late. Humans have got used to wasting me and taking me for granted. It's getting hard for me to breathe when chemicals are tossed into my murky depths.
What will they do when there are billions of them and only so much of me? सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. Drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. Drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. Drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। चल चलो बदल दे कहानी
When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. I am the cradle of your civilization. But what will life be when I culminate? Remember, a drop of water makes an ocean. A drop of water can save humanity. So why do you have to wait for others? Start today, start now, at this moment. Save water, save life. Not only from birth to death I need you. Even after death, I need you to submerge my ashes. Oh rivers, you must flow. Oh nadi ha nadi ho nadi nadiya. 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 सूख रहा है जल बिन जलना है कल, सूख रहा है जल बिन जलना है कल। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। We humans have damned you, jammed you and dug holes into you. Allow me to nourish you. कुदरत की सौगात जिस दिन तू गवाएगा, सांस भी ना आएगी ना वायु पाएगा, ना वायु पाएगा ना वायु पाएगा। कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। Oh rivers, we can never pay back the debt for all that you have done to us. Let me at least pay a small interest towards your well-being. आए क्या कर डाला, माँ गंगा को कर दिया काला। है इंसान ये क्या कर डाला, माँ गंगा को कर दिया काला। बंजर ना हो जाए माटी, आ ढूंढे चल इसका हल। तू जल खल खल बहती नदियाँ, तू जल खल खल बहती नदियाँ। जीवन बन बन साथ तू सदियाँ, जीवन बन बन साथ तू सदियाँ। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया। हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी हो
कर्ज चुकाएंगे नदियां मिलके तुझको बचाएंगे हो नदी हाँ नदी हो नदी नदिया 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 आंखें खोल ले जग ले अब जल है जीवन जल है रब आंखें खोल ले जग ले अब जल है जीवन जल है रब आंखें खोल ले जग ले अब जल है जीवन जल है रब कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे नदियां मिलके तुझको बचाएंगे हो नदी हाँ नदी हो Ursula K. Le Guin has rightly said, "It is good to have an end to the journey towards, but it is the journey that matters the most in the end." And we today have had quite a ride. We started with an ode to nature, moving rhythmically to the aura of Nad, into the clefts of the tension between humans and animals, and finally coming down to the ultimate truth of water. The journey today has not only been vivid and amusing, but has also left me, and I'm sure a lot of you, brooding about how our daily human activities affects not only nature, but other human beings around us as well. As the theme of our this year's Meraki, the man and the natural world, not only did this event make us aware about what we are neglecting about our nature, but also helped us look at the world from a different perspective. The relation between man and the natural world is a very deep one, and only a peaceful mind and a keen observer can understand it. The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of some only a green thing that comes in the way. Some see nature all ridicule and deformity, and some scarce see nature at all. But to the eyes of the man imagination, nature is imagination itself. Thank you, everyone. Namaskar. Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all things in your gratitude. Ralph Waldo Emerson says so. How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard, and indeed, it is hard to bid farewell and goodbye today. The Meraki 21st Fest, the vibrant virtual gathering where we all met with such enthusiasm for last 3 days, is about to wind to a close. There are simply no words how much I and my PA team enjoyed putting this fest together. Not just this year, but previous 2 years as well. This year, I was overwhelmed by the full crowd we do every day virtually, and I was so touched by the warmth, affection and goodwill of our Vice Chairman Amrit, Education Director Mamta Kapoor ma'am, HR Sucheta ma'am, Priti ma'am, Himani ma'am, Anand sir, and all the academic heads that seems to engulf me like a cocoon, making me full, energized and cherished by all of you. I was humbled by the indulgent
affection shown to me by my every member of the performing arts fraternity. Be it legendary Guru Padma Shri Chitraviseshwaran, vibrant sports expert Dr. Monika Devan, or literary genius Gunjan Tripathi, renowned theatrician Kailash Kumar, my own generation artist Anuradha Nirala, or younger alumna artist Arunima Kotia. I thank my entire management of KPS for trusting me with convening the Meraki Fest, where my team with me has worked very hard to live up to the commitment. I am deeply thankful to the member of my PA team, each one of them, for their tireless hard work to make this event successful. Dear team, you all are my gems. Without your help, Raju sir, Oni ma'am, and the entire VA faculty, Meraki wouldn't have been so colorful. I pay my gratitude to the Iron Lady of event, Snehalata Chauhan, whose relentless effort to make each event of KPS praiseworthy, be it MEVEN, TEDx, or Meraki. Thank you, Snehalata ma'am. My heartfelt thanks to media team, led by Kusum ma'am. Every time of the nook and call, whenever I called her, she was always there with me. Vicky sir and Vishal, for your tremendous support to make this event so happening and full with audience virtually. Team admin, led by Harsh sir, with his team, Amitji, Pravinji and Vivekji, can't thank you enough for always standing beside us whenever we needed you. My special thanks to Veer Singh ji, Sunil, Mukesh, Babli, and entire support staff of KPS for taking care of us in the time of the shooting, recording, and whatnot. How could I forget you, my alumna, and group of moderators? Without you all, it was not possible to convert an offline event into online overnight. Siddhant, Anshita, Tanishk, Ishita, Chavi, Vanshika, Shivika, Apurva, Amshi, Kamakshi, Devaditya, Shivam, Riya, and Ridhima. Love you tons. You all are true example of our KPS motto: we create leaders for life. Sound, camera, lights, Wi-Fi, connectivity, Zoom, dry run, nothing would have been possible without you, Sandeep sir, and your team. Vijendra, Shekhar, and Jitendra, my respect and humble gratitude to you all. As Anirudh sir says, you all are the real rock stars of KPS, especially in this virtual world. Thanks to all the parents, students, teachers, and entire staff members for standing tall in the midst of this worst situation of COVID, helping us to conduct Meraki Fest 21. I hope that you all enjoyed the fest. I hope many new thoughts related to SDGs and sea learning have sprung up. Seeds of innovation have been sown on creative minds, and we will go back infused with multiple unforgettable memories of what we have seen and heard. So, now it's time to say really goodbye until
we meet again in 2022, where Meraki and Kalaparv will walk hand in hand with new name and new identity. Adieu.